speak to some of the people who stopped. There are others who simply watch him go by. So they have concerns which they hope that Rahul Gandhi will address. क्या अच्छा लगता है कि राहुल गांधी आए हैं यहाँ कि नहीं? अच्छा लगा। पर आप चाहते थे कि रुके? फसान में नहीं पड़े, कोई बताया कौन फसान में नहीं पड़े, जो कोई तो दिखे है कोई न कोई। राहुल गांधी से मिलने आए। आप राहुल गांधी से मिलने आए, क्या पूछना चाहती है राहुल गांधी से? राहुल गांधी से मिलवाया था। आप मिलना चाहती है उनसे? माँ के पानी की व्यवस्था नहीं है। आप चाहती है उनसे कहें कि पानी की व्यवस्था करें? माँ कोई धंधा नहीं है। अच्छा, तो आप चाहती है पानी की व्यवस्था करें। कौन सा गांव है आपका? यह दौसा है, वो एक व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो आप चाहती है कि राहुल गांधी रुके और आपकी बात सुने? राहुल गांधी रोकने रहने की व्यवस्था नहीं है। बात करा दे राहुल गांधी से। आपको अच्छा लगता है कि राहुल गांधी आए हैं यहाँ कि नहीं? अच्छा लगा। हाँ, लेकिन आप चाहते हैं कि आपसे मिले? मिले मासूम मिले मिल भाई बात सुने। क्या बात करना चाहते हैं आप? यहाँ कई सारी परेशानियां हैं, पानी की है। हाँ। और कई जो व्यवस्था है उनको सुगम बना सके। तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या। तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी? हाँ जी सर, ये दुकानें हैं। हाँ। 10 फुट दूर ट्रांसफार्मर लग रही होते हैं, लेकिन 10 महीना होगा कनेक्शन को 20 चक्कर काट दिया। पर सवाल है कि राहुल गांधी कितने लोगों से मिल पाएंगे? सबसे तो नहीं मिल पाएंगे। आप निवेदन करिए तो मतलब ये रसीद देखो, 10 महीना होगा कनेक्शन को 20 चक्कर करा लिया। अच्छा, कनेक्शन जयपुर विद्युत दोसा और कनेक्शन नहीं मिली आपको? यहाँ को ट्रांसफार्मर से साल भर पूरी होगी और 20 चक्कर काट दिया। अच्छा, काट दिया आपका कनेक्शन? नहीं, हमने 20 चक्कर काट दिया। डिमांड नोट नया कनेक्शन को नहीं हुआ नया कनेक्शन। अच्छा, चक्कर तो केरला में पानी की बूंद ही कौन पानी में प्यासा मरा था। डांडी डोरी को सब कुछ ये देखो साहब। तो पानी की समस्या, बिजली की समस्या है। तो मैं ये सर, ये ट्रांसफार्मर, ये दुकान है। ठीक है, पर आप लोग ये बताइए कि राहुल गांधी आए हैं। केंद्र में सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए। पर आप खुश हैं? नहीं, आप बेरोजगारी हो रही है। नहीं, इस भारत जोड़ो यात्रा से आपको लगता है कि आपकी अच्छी लगी यात्रा। अच्छा, अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा? अच्छा ये लगा कांग्रेस केंद्र में सरकार लोगों को जोड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, गरीबों का समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। गरीबों की सरकार कांग्रेस है। पर आप चाहते हैं कि वो आपसे मिले और हमारी समस्या सुने। पर आपको अच्छा लगा है कि कम से कम वो पैदल चल रहे हैं? उम्र में तो ऐसी यात्रा नहीं देखी। जी, नफरत को मिटाने के लिए चल रहे हैं। सबसे अच्छा ये गरीबों के लिए। और कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। बेरोजगारी हो रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है, सब बेरोजगारी हो रही है। तो आपको लगता है इस यात्रा से कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा। आपके राहुल गांधी को देखने आए हो? राहुल गांधी की उपलब्धि। हाँ, क्या है समस्या? समस्या है, एक तो रोड की समस्या है, एक पानी की समस्या है। हाँ। और हमारे को पास बिजली का बिल बहुत तेज आ रहा है। हमारे पास सबसे ज्यादा बिजली का बिल जाता है, महंगाई ज्यादा है। तो आप ये राहुल गांधी के सामने रखिए अपनी समस्या। जी सर, तो आएंगे तभी तो उनके सामने रखेंगे ये समस्या। इसीलिए आए हम, समस्या उनके साथ रखेंगे हम। तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी रोके वहाँ और आपकी समस्या? हम वैसे बहुत अच्छा नेता है और हमारी गरीबों की सुनेंगे और वो एक मन की बात को समझने वाले गरीब आदमियों के हित के आदमी है सर जी। तो आप चाहते हैं कि वो रुके और आपकी बात सुने? हमारी बात सुने। We are right in the center of the Bharat Jodo Yatra at the moment. Rahul Gandhi, as you can see, is walking along with his core team. Sachin Pilot close to him. Maybe Mr. Pilot hopes that this proximity to Mr. Gandhi on the Yatra will help him in Rajasthan's power struggle. Remember, the attempt is to show that Rahul Gandhi is reaching out to people, is more accessible. But whether it will actually benefit the party electorally, that remains the big question. For now, the focus on Rahul Gandhi, the security all over, as you can see, and he's cordoned off in a way from the people who have gathered here to watch the Congress leader. Venugopal, how are you? Yes, You're handling this entire yatra. What is the biggest challenge for this yatra for you? Actually, the conditions of weather, it is changing day by day.
That is the real challenges. Morning 6 o'clock we are starting the yatra, but even though, despite of this weather condition, thousands or tens of thousands of people are coming here, involving here, and appreciating the yatra. It's a great success for the yatra. You have spent 100 days. The yatra has completed. What is the biggest achievement of this yatra? The 100 days of this yatra is the biggest achievement. Is that actually this is become a major campaign part of the national narrative against the divisive politics, against unemployment, against price rise. But how will you respond to those who will say, why didn't the yatra go to Gujarat? Why didn't it go to Himachal where there are elections? Actually, you know that the yatra has planned in such a design that start from Kanyakumari to Kashmir on a route. There is no possibility of going Gujarat at that point of time. But why didn't you link it to politics? No, it's not linked to elections. No, it is not linked to election. Why? Definitely. No. It is actually the country needs such a yatra now. Beyond, despite the election prospectus, that is why we decided to have a yatra from Kanyakumari to Kashmir. That don't club with the Gujarat elections. That. How have you linked it to people? How have you managed to link it to people? Has it improved Rahul Gandhi's image or Congress's image? No, Rahul Gandhi's image was there earlier also. The clear attempt of Sangh Parivar and BJP to tarnish Rahul Gandhi image through fake campaign and fake social media have been demolished by this yatra. You are convinced that this yatra has demolished the fake image of Rahul? That life factory productives of Rahul Gandhi's image has been demolished. Is that the biggest achievement? Is one of the achievement. Certainly one of the achievement. A leader's image, actually he is clearly passionate, love and affection towards the people, and he is very much close to the heart with the common people. That has not been portrayed by BJP Sangh Parivar people. But now the people of the country realizing who is real Rahul Gandhi. That is one of the major achievements of The police officers here have got a bit of a break too. They have been tracking this yatra from day one, and for them, it's a huge security challenge. Sir, good to see you. For you, it's a huge security challenge. Exactly. What is the biggest challenge for you on this yatra? The first major point is close protection security. Because we have to follow yatris, VVIP, Chief Minister and many ministers walking along, and we have to give close protection and walk along continuously. So it's you have to be fit. Yeah, exactly. And you have to be completely alert. And you worked with Rahul Gandhi on this yatra earlier with other members of the Gandhi. No, we are from Rajasthan police. You all are Rajasthan police. So you are tracking it along the Rajasthan. We take care of security arrangement in the state of Rajasthan. In Rajasthan, we are doing this one. And you have to wake up early every morning. I don't know how you do it. It's normal for us. ये यात्रा तो हो रही है, लेकिन एक तरफ गेहलोत जी, दूसरी तरफ सचिन पायलट. उनको कब आप जोड़ पाओगे? युवा सचिन पायलट जी को चाहता है और राजस्थान का युवा आस लगाए बैठा है कि राजस्थान में सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए. आप चाहते हैं कि सचिन पायलट हम यूथ को सचिन पायलट दोनों एक ही पार्टी के हैं. ये जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही पार्टी के हैं. दोनों साथ ही काम कर रहे हैं, एक ही पार्टी के हैं. दोनों एक है. 2023 में कांग्रेस रिपीट होने जा रही है. बताइए. 2023 का चुनाव अगर सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा जाता है तो राजस्थान में रिपीट करेगी, वरना राजस्थान में बुरा हाल होगा. जो चिकित्सा का मॉडल अभी पूरे राजस्थान में लागू हो रहा है, 10 लाख तक की सीमा को भी हटा दिया गया है. अगर सीएम फेस अगर सचिन पायलट साहब को करते हैं तो बहुत ज्यादा होगा, बम्पर सीटें आएंगी. गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है. हाँ. और गहलोत साहब का अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है. गहलोत साहब ने अच्छा काम किया. बहुत अच्छा काम किया है. और अभी अगर ये जो कुछ लोगों की आवाज आ रही है, 6 महीने में सचिन पायलट बहुत अच्छा आदमी, कर्मठ है, युवा है, एजुकेटेड है. लेकिन अभी जो शेष 1 साल का समय बचा है,
6 महीने में सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो सारी योजनाओं पे पानी फिर जाएगा। तो आप कह रहे हैं गहलोत जी ने हमारी राजस्थान की, आप गहलोत जी ही कंटिन्यू रहे। राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। आप नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं? तो यहाँ तो बात भारत जोड़ो की है, आप चाहते हैं कांग्रेस में नेता परिवर्तन हो? राजस्थान में जब भी सरकार आ सकती है जब नेतृत्व परिवर्तन हो। तो आप लोग पायलट जी को चाहते हैं? पायलट सब। पर कई जो बुजुर्ग है वो कह रहे हैं अशोक गहलोत अच्छे नेता हैं। आप दौसा से हैं, ये पायलट जी का गढ़ है इसलिए कह रहे हैं। युवाओं को भी तो मौका मिलना चाहिए। तो आप चाहते हैं युवाओं को मौका मिले इसलिए पायलट जी को मौका मिले। माननीय अशोक गहलोत जी को तो मैं और धन्यवाद देना चाहता हूँ। घुमंतु जातियों को 50 गज का तो पट्टा दिया और कम से कम 2 से 2.5 लाख उनको मकान का दिया और 1 रुपए किलो वाले गेहूं मिल रहे हैं ना तो वो राजस्थान के अंदर मिल रहे हैं और फरी दवाई गोली जो मिल रही है ना तो वो राजस्थान में है और चिरंजी का जो काम हो रहा है ना वो राजस्थान में अशोक गहलोत और राहुल गांधी जी की देन है। आप में से किसके पास रोजगार नहीं है? ग्रेजुएट है? ग्रेजुएट है? जी सर, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ सर। हाँ। और उसके बाद भी ये मान लो कोई जॉब नहीं है मेरे पास, जॉब लेस है और मेरे संग वाले सारे अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई जॉब ना है। तो ये आप जॉब इज फर्स्ट प्रायोरिटी सर। जॉब इज फर्स्ट प्रायोरिटी सर। पर आपको लगता है इस यात्रा से कोई फर्क पड़ेगा? जी सर, बहुत ज्यादा सर। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल गांधी जी की जो इमेज बनी हुई है जो मीडिया में जो आम पब्लिक में, उस इमेज में काफी सुधार हो रहा है। राजस्थान में युवा नेताओं का जमाना आ गया है। पहल हो चुकी, पहल हो चुकी है। आपको बताइए आपके पसंदीदा नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी? सचिन पायलट हमारे यहाँ का राजस्थान का सचिन पायलट पसंदीदा नेता है। क्योंकि ये दौसा है। दौसा का मतलब है युवाओं की धड़कन, युवाओं की धड़कन, युवा दिलों की धड़कन। अच्छा, और अशोक गहलोत जी? लेकिन दौसा जिले की एक सबसे बड़ी समस्या है, परंतु युवाओं को मौका के कारण सचिन पायलट। लेकिन दौसा जिले की एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पानी की बहुत समस्या है। पानी के बिना लोग यहाँ से लागू तो आपको लगता है यात्रा से पानी मिलेगा? आपको यात्रा से कुछ तो फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? बात केंद्र तक तो पहुँचेगी। बात केंद्र तक, पर यहाँ तो सरकार तो राजस्थान की कांग्रेस की है। तो पूरा मुद्दा ये आप सचिन पायलट के सामने रखिए। दौसा का काया पलट हो गया राहुल आने से। पानी का मुद्दा राजस्थान का। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई है यात्रा की? सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश में माहौल जो है जी, जो इश्यू है कंट्री के, हाँ, महंगाई के, बेरोजगारी के जी, और नॉन वायलेंस का माहौल होना चाहिए देश के अंदर जी। शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा होना चाहिए। इसमें राहुल गांधी कामयाब हुए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। क्योंकि आपके राज्य में 1 साल में चुनाव होने आ रहे हैं, तो क्या इस यात्रा का चुनाव पर कोई असर होता है या नहीं? तो देखिए स्वाभाविक असर होता है, स्वाभाविक असर होता है जी। बड़ा एम जो राहुल गांधी जी का है वो है जो भी विश्वास करते हैं नॉन वायलेंस में, सर्वधर्म समभाव में, जो इश्यू है महंगाई का, बेरोजगारी का, उस पर जिसका यकीन है कि ये बहुत बड़े इश्यू है, वो सब शामिल हो रहे हैं। वो एक मैसेज गांव-गांव, घर-घर पहुंच गया पूरे मुल्क के अंदर। सर, एक इश्यू पर आप बात नहीं करोगे, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट। ये आप लोगों की लड़ाने की योजनाएं रहती है मीडिया वालों की, आर्टिकल लिखते रहते हैं लड़ाने के लिए। ये परंपरा खत्म करो, जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात मत करो। नहीं तो आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं ना? हम नहीं लगाते, आप लोग लगवाते हो जी। छाप के, प्रिंट में, वीडियो के अंदर। ये आप ही परंपरा बंद कीजिए, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। और आप राजस्थान में यशस्वी रहेंगे 1 साल में, कॉन्फिडेंट है? मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, जिंदगी भर रहूंगा। प्रथम सेवक हूँ राजस्थान का, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक मैंने देखा आप सुबह वॉक कर रहे थे 6 बजे, आप बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं अशोक जी। इतने वॉकिंग करके सुबह 6-8 किलोमीटर वॉक करना आसान नहीं है, और वो भी राहुल गांधी बड़ी तेजी से वॉक करते हैं। मैं लिमिट से यात्रा करता हूँ, सारे मैनेजमेंट भी करता हूँ, अपना काम भी करता हूँ। अच्छा, दोनों कर पाते हैं? यात्रा पर भी जाना पड़ता है और जयपुर में जयपुर तो मैं नहीं जा पाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ता है। मैनेजमेंट हो जाता है आजकल तो, IT का जमाना है। ये आपका राज्य है तो आप इस राज्य को तो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं एक आखिरी बार पूछूंगा, अशोक गहलोत का अगला कदम क्या? अगला चुनाव में जीतना है
इतिहास बनाना है और जो हमने फैसले किए हैं 4 साल में, मेरे ख्याल से संभवत शायद देश के किसी राज्य में नहीं हुए हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और लीडरशिप आपकी रहेगी? लीडरशिप तो हाईकमान की रहती है कांग्रेस के अंदर हमेशा। अशोक गहलोत के नेतृत्व में उसको हम फॉलो करते हैं। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ऐसी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो हाईकमान से चलती है और सब अनुशासन में रहते हैं हम लोग बस। with Sachin Pilot in Dausa, which is pilot country, represented by his father several times, by you and your mother. Tell us, is this about Bharat Jodo or Congress Jodo in Rajasthan, Sachin Pilot? Congress is fully Jodo. Please be in no doubt about that. You and Mr. Gehlot are on the same page? We all are on the same page and all are working together to make sure the party wins elections in the 12 months that we have left. This Yatra basically is for getting people together to raise issues of people. Look at the lakhs of people joining this Yatra. The sentiment is with Rahul ji. This is not a vote-catching exercise, but the Yatra itself will allow people to get political dividends in their own states. That's what the objective is. Because I just met Mr. Gehlot also. I asked him, he also says, sab kuch theek hai. So, it almost seems as if you all are trying to, for the cameras, claim all is well. All is well, all will be well also. No, because look at the things that have been said in recent times by both the camps. How can you say all is well? जिसने जो बोला खत्म होगी बात पुरानी होगी. Let's move forward because time doesn't wait for anybody. We have to look ahead, be positive, and work towards getting this. Are you hopeful that you will be made CM after once this Yatra leaves Rajasthan? I'm hopeful that we win the Rajasthan election. That's what's important for us. Few Congress MLAs are accompanying Rahul Gandhi right through this Rajasthan leg of the Yatra, including Divya Maderna, who interestingly is one of the few MLAs who's tried to stay away from the Gehlot and the Pilot faction. Am I correct? I think every congressman is with the Congress and they should be like that. So whoever the Congress leadership wants will become the next chief minister in Rajasthan, because there's so much of debate in Rajasthan over will Sachin Pilot take over after this Yatra leaves Rajasthan? Will Mr. Gehlot stay on? What happens? I said we're all working for Bharat Jodo in the leadership of Rahul Gandhi ji, and whatever the leadership is going to decide, whether it's going to be the continuation, whether it's going to be a change or what, I don't know. I'm not talking about the political landscape, but you should also focus on the historic Yatra that is going and passing through. No, I'm focusing on Bharat Jodo, but many say that before Bharat Jodo, it needs Congress Jodo in Rajasthan. You agree with that or no? No, I disagree completely with that. I think we are all standing united under one umbrella. We all stand showing our solidarity with Rahul Gandhi ji, and there's no fraction when it comes to him. How will this Yatra help you in the Rajasthan elections that are only 1 year away now? Well, the Yatra entered on 4th this month. 5th, we had a by-poll election voting on 5th, and we won that election by a good margin of 26,000. And when you were saying that, when we are coming from the south states, it's got a historic response. Will they have the same response in Hindi Patti? We had a historic response in Hindi Patti. Then you said, what's going to happen in Rajasthan, because of the faction fighting happening here, and is also eyes on it because it's the first Congress ruled state. And you have a thumping majority kind of. But they're mainly Congress workers. Most of the people accompanying the Yatra are Congress workers. What about reaching out to the ordinary Admi? No, the ordinary people. If you see by the fence, by the Rassi, all the local peoples are coming. The district local peoples are coming. If you're crossing a village, they're all local peoples coming. And they happen to shout at Rahul Gandhi. Yeah, they're shouting, but I met some people who are saying that we wanted Rahul Gandhi to stop and listen to us. Hame pension ka problem hai, hame rozgar ka problem hai. He's 99% listening to everybody. Now, obviously, he can't listen to every single person. But there's a group who shouts at him and he said, okay, please take them. And it's not even photo ops. He talks to them like a good 10, 20 minutes. He wants to know what your problem is. If they have something to do, he appreciates about. There's a girl who came and she was handicapped and they called and gave him a scooty. And within 2 hours, the scooty was given to her. There's another girl who came and she started crying. I don't know what the problem is. I was just walking beside her. The collector and the SP was called right away and that was sorted out. So it's not a photo op. No, it's this not a Yatra is not just event management and a photo op. No, the BJP says ye to event management hai, ye photo op hai. Yeah. BJP is rattled. BJP is rattled by Rahul Gandhi ji. They spent 1,000 crores demolishing his image. His true image has come out of Bharat Jodo Yatra. You were first saying that he goes for a holiday. He's not a committed politician. We can see he's walking. He's 6 in the morning. No matter what comes, even if it's a Himachal oath, he first completed his Yatra, went for the oath, came back and started at 3:30. What's happened is that along the route of the Yatra, various groups have organized cultural events. For example, here the nomadic tribes of Rajasthan have organized this event. In a way, this perhaps is one
advantage that the Yatra gives to the Congress party. Remember, Rajasthan goes to the polls next year, and it's an opportunity for the Congress, which has been on the back foot in Rajasthan, to at least connect with specific social groups. वोट देंगे। पानी की समस्या है। Wherever you go, पानी की समस्या है। पानी कितने घंटे मिलता है? मिलता ही नहीं है। पानी मिलता ही नहीं है। पीने का पानी मिलता नहीं है? नहीं मिलता, हमारे यहाँ नहीं है लाइन। तो आप चाहते हैं कि पीने की पानी की समस्या उनके सामने रखे? जी सर। आप लोग को क्या मिलना चाहते हैं? हाँ सर, मैं मिलना चाहता हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ दौसा का ही रहने वाला हूँ। हाँ। तो मैं राहुल गांधी जी के थ्रू अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी से ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में बेरोजगारी इस टाइम एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी समस्या है। आपको रोजगार नहीं है क्या किसी को? हाँ, राजस्थान में रोजगार नहीं है। आप क्या ग्रेजुएट हैं? मैं तो जॉब करता हूँ, पर मैं मेरे साथ वाले जो दोस्त है, भाई है, बहुत मेहनत करते हैं, पर ये बेरोजगारी इस टाइम सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बड़े नेताओं के पास ये बात पहुँचे। तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी आपकी बात अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पास पहुंचाए? इससे एक परेशानी सुलझी है। क्या? यहाँ के रोड जितने भी थे ना, आज तक खड्डों से भरे हुए थे। एक महीने के अंदर जो रोड का विकास हुआ है, वो जिंदगी में आज तक नहीं हुआ। अच्छा, तो यात्रा साथ के साथ ये जितनी भी व्हाइट लाइन लग रही है रोडों पे, ये आज तक नहीं लगी। जितना भी वेलकम लिखा हुआ है, आज तक दौसा में वेलकम ही लिखा हुआ है रोडों पे। इतिहास गवाह है। पहली बार रोड और ऐसे चीज पहली बार। तो यात्रा के आने से रोड तो क्या ठीक हो गए? रोड बहुत अच्छे हो गए, साइड में सफाइयाँ हो गई, ठीक हुई है। रोड भी ठीक हुए, सोच भी ठीक हुई है। सोच कैसी हुई? सोच यहाँ कट्टरवादी सोच थी लोगों की, जो अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रही है राहुल गांधी के प्यार में। बहुत अच्छी बात ये हुई है, कांग्रेस के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा है। बहुत बम्पर रुझान, और जो बहुत ही झूठ बोलता है। 2019 में तो नरेंद्र मोदी जी ने वो तो झूठा, सबसे बड़ा हिंदुस्तान में वर्ल्ड का झूठा है। Okay, we've decided to take a chai break from the yatra here on the Dausa Jaipur highway, and guess what? Also having chai is the Congress's media brains trust, Jairam Ramesh, Pawan Kheda, Vineet Punia. Appreciate your joining us here, Jairam Ramesh, for a chai break. You're not walking, you're having chai. I did 14 kilometers in the morning. You walked 14 kilometers? In the morning. Jairam Ramesh, walking around the yatra, obviously there's a lot of enthusiasm among Congress workers that one sees, but there's also a lot of concern that among congressmen that whether this can actually translate into electoral benefit. You all seem to have decoupled this yatra from politics. You are a political party. How do you respond to this criticism? We've decoupled it from politics. We've decoupled it from electoral politics. This is very much a political yatra by a political party with political objectives. We are raising issues of economic inequality, social polarization, and political authoritarianism. These are all political issues. But you could have raised these issues in Gujarat where there is an election. It has been raised. It has been raised by. No, your yatra didn't go to Gujarat at all. So the question therefore. If you just to remind you of the geography of India, we couldn't have gone. Even a 56-inch chest couldn't have reached Gujarat. Starting with Kanyakumari on the 7th of September, even a 56-inch chest would have taken more than 100 days to reach Gujarat, by which time the elections would have been over. I think fundamentally you're misconceiving the objective of the yatra. This has nothing to do with Vidhan Sabha election or the Lok Sabha election in 2024. It had to do, when we recall the genesis of the yatra, which was in Udaipur, how do we rejuvenate the organization? How do we give the Congress organization a new sense of collective purpose? And how do we raise issues which are of public importance in a manner that we are not going to be throttled
either in Parliament. If we are not allowed to discuss the issue of the India-China border in Parliament, what do? We have to come out on the streets and we have to talk about these issues. But has the Yatra, in that sense, you believe, 100 days on, achieved that purpose? Is this about repackaging Rahul Gandhi, or is it about making the Congress more connected with the people through these issues? It's about rejuvenating the Congress. Mr. Gandhi is the public face of the Yatra. There are 135 Bharat Yatris today. There were 120 when we started. And these 135 Bharat Yatris are drawn from across the country. Average age is 38. A third of them are women. Naturally, the focus is on Mr. Gandhi. The image of Mr. Gandhi, which the Bharat Jodo Yatra will throw up, is not the cause of the Bharat Jodo Yatra, is a consequence of the Bharat Jodo Yatra. The Bharat Jodo Yatra was basically a means of rejuvenating a Congress party organization and giving the Congress workers in the states a new sense of purpose, a new sense of collective endeavor. But what happens when the Yatra ends in 40 days? Will that sense of purpose continue, or will it end with this Yatra, the sense that, okay, Rahul Gandhi's done his bit, now it's for the party to take it forward? Well, you're obviously not following the news, Rajdeep. We have already announced a follow-up to the Bharat Jodo Yatra beginning on the 26th of January. This Haath Jodo Yatra, Haath Jodo, which is a 3-stage process at the level of the block and the booth, then at the level of the district, then at the level of the state. That's a 2-month exercise which will follow up on the Bharat Jodo Yatra. And who knows, in 2023 we may even have a west to east Yatra. So in that sense, 2024 is still very much on the Congress's radar, that you want to put up a stronger electoral performance. Because there is a sense of cynicism given what's happened with recent election, that BJP remains party number one. The BJP says this Yatra is a Yatra which has no political direction, is how the BJP looks at this Yatra. No, I won't give any credence to... Walking into nowhere is how they put it. Very childish approach of saying that it does not have a sense of political purpose. It's a Yatra by India's oldest political party, the party of the freedom movement and the party of governance. To say that it has no political objective. We are raising political issues. We are raising issues that should be part of the nation's political agenda, but which they are not, because of both the personality of the Prime Minister and the policies of the Prime Minister. So to say that this is not a political Yatra, I think is completely misreading what the Yatra is all about. It's not an electoral Yatra. We are not going out saying, vote Congress. No, but we're not saying Congress jitao. But along the way, even in Dausa and villages around it, number of people told me their biggest problem is water. और उन्होंने कहा राहुल गांधी से मिलवाइए. We want to tell Rahul Gandhi our problems of water. We want to tell them the problems of unemployment. Now he can obviously not meet everyone. But the fact is, how does he address the real issues? Expectations rise with a yatra. Then you have to meet those expectations. I'll tell you. The Eastern Rajasthan Canal Project, which will benefit Dausa along with 13 districts of Eastern Rajasthan. The Prime Minister made two promises twice, once in Jaipur and once in Ajmer, that this project will be implemented. This project for 4 years has not been implemented because Mr. Modi's government has refused to declare the Eastern Rajasthan Canal Project a national project, which means 90% of the expenditure will come from the central government. The Ashok Gehlot government has gone ahead and has allocated 9,000 crores to get this project off the ground. Mr. Gandhi is meeting different groups day out. Yesterday he met farmers. What do the farmers want? They wanted better compensation for land acquisition. They are saying that the 2013 law has been subverted by the Modi government. They're wanting legal guarantee for MSP. They're wanting, more access to Kisan credit cards. Many of the farmers asked for the Eastern Rajasthan Canal Project. So we are not in power, but where we are in power, where we are in a state government, of course, issues are raised which concern the state, and the Chief Minister is there. The Chief Minister responds, and if there are more things to be done by the government, Rajasthan, to give you an example, Rajasthan, 90% of Rajasthan population is covered by the Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana.
The all India average for health insurance is 40%. In Rajasthan, the famous Ayushman Bharat, which Mr. Modi keeps beating the drum about, is limited to BPL families. The Chiranjeevi Yojana in Rajasthan is applicable to all families, and treatment up to 10 lakhs is free in government hospitals. Now, this is something that Mr. Gehlot mentioned to the people who came and were worried about increasing indebtedness on account of health expenditure. And many of them appreciated these initiatives. It's interesting that you're mentioning Mr. Gehlot. I just want to bring in Pawan Khera. Since Pawan, this is your home state, a number of places where we go, there is still a underlying pilot versus Gehlot narrative. In Dausa itself, we saw people cheering, make Sachin pilot the chief minister. Is this still an issue? I mean, can the Yatra, can Bharat Jodo really ensure Congress Jodo, Pawan? I don't think there is any issue in terms of Congress not being united. Healthy competition within a party is a must for everyone to be on his or her toes, for everyone to bring out the best. Competition such as this brings out the best in all the stakeholders. So I don't see what is an issue with people being competitive. No, I'll tell you what the issue is. The issue is that when we speak to people, there's a sense that the BJP in particular says the Congress should first do Congress Jodo before it does Bharat Jodo. So, my advice to the BJP is, please tell us which is the real BJP in Rajasthan, the Punia faction, the Gajendra Singh Shekhawat faction, or the Vasundhara faction, or the Om Birla faction, or the Om Mathur faction, or the Nagpur faction. So please tell us which is the real BJP in Rajasthan. Even the people of Rajasthan don't know which is the real BJP. Okay, so we've come to Jaipur, to the Congress headquarters here, where Rahul Gandhi is to give a press conference shortly. The Congress strategy has been to get Rahul Gandhi to give at least one press conference in every state he travels through. 100 days of the Yatra are over. Therefore, this might be a good time to actually do a balance sheet on what really has the Bharat Jodo Yatra achieved. That's the question we'll ask Rahul Gandhi. Come with us. Is electoral success one of the criteria for you when you say success of the Yatra? And what next for you after this Yatra, Rahul Gandhi ji? Are you building towards 2024? Is that also part of this Yatra's journey, sir? Look, there is a particular vision of this country that the RSS and the BJP propose. There's a particular path that they believe this country should take. It's a violent path. It's a hate-filled path. It's a path that is designed to create two Indias. One is an India where there are 5 or 6, 10 billionaires, and the other India where everybody else will live in poverty, in desperation. That's their vision. It's also a hate-filled vision. It's an angry vision of India. And it is a view. It is a view held by quite a few people that this is what India should look like. That one language should dominate, one state should dominate, one idea should dominate, one culture should dominate, right? One religion should dominate. And there's another view. And that view is that this country should talk to itself. It should have a conversation with itself. It should be affectionate to itself. It should understand the pain that this country is going through. It should not be arrogant. It should be humble. It should reach out to other people. It should embrace other people. This is another vision. This is what the Bharat Jodo Yatra has been very successful at showing. That there is another alternative. Nobody in the Yatra is beating each other up. The Yatra has been full of love and affection. Anybody comes, they're treated with respect. Doesn't matter who they are. A lot of people come to me, when I'm talking to them, I don't agree with them. They'll say something to me, I tell them I don't agree with you.
But there is the space for the disagreement. So where the Yatra has been extremely successful is that it has shown that there is another way of doing things. One of the reasons the BJP wins elections, I mean, there are multiple reasons, right? There is that they have huge amounts of money. They use the institutions of the country. They pressurize and threaten people. Those things, those tools are not available to us. We don't want to use them. But one of the other reasons that BJP wins elections is because they're very clear on who they are. They're hateful, I don't agree with them. They divide India, I don't agree with them. But they have complete clarity on who they are. It's easy to have clarity on who they are, because for them it's just, do you hate so and so? Yes, you do. Okay, that's who you are. For us it's much more complicated. But the day the Congress party understands in depth who it is and what it stands for, it will win every election that it faces. भैया जी हमला। भैया जी 10 गोलियां ले ले। गोलियां नहीं रज्जा, गोली। पर बाहर तो 10 लोग हैं। 10 हो या पूरी बस, अब तो बस 1 है तो डन है। इसको कोई वॉचो वॉच कराओ। जब वॉचो में मिले ढेर सारे OTT ऐप्स एक ही प्लान में, तो हर कोई बोलेगा वॉचो 1 है तो डन है। वॉचो प्लान स्टार्टिंग एट जस्ट 42 रुपीज पर मंथ। आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं सिलेक्ट प्लान्स पर 1 महीना कॉम्प्लीमेंट्री। News is about putting people first. Just look at the queues right across. About asking the right questions to those in power. Is money power being used to bring down elected governments? Who will be held accountable for ministerial corruption? It takes no sides. माँ का दर्द एक दर्द कोई नहीं समझ सकता उस दर्द को. It reveals. It heals. Angry people came out on the streets. Is this the kind of justice system we want in this country? News is all heart and no hatred. बिल्किस बानो आज क्या कहना चाहेंगी आप? हमारे साथ जो हुआ है किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए. Experience the news. With me, Rajdeep Sardesai, only on India Today. Okay, what do the Bharat Jodo Yatris do every evening when they're not walking? They're playing volleyball. Now, the Yatris come from different parts of the country. They stay in these containers that have been brought here. It's a huge logistical exercise. We thought we'd find out from the seemingly anonymous Yatris who they are, why are they joining this Yatra, what are the difficulties, and what do they enjoy about being part of this Bharat Jodo Yatra, and how do they respond to the BJP's criticism that this Yatra has no political relevance. Let's find out.
कम विथ मी। क्या वॉलीबॉल एंटरटेनमेंट है? कहाँ से हो आप? MP। क्या नाम है? सिद्धार्थ सिंह राजापुर, स्पोक्स पर्सन हूँ मैं। पूरी यात्रा पे जा रहे हो या केवल? स्टेट यात्री हूँ मैं, स्टेट यात्री हो? स्टार्ट हुआ। अच्छा, महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ। आपका नाम? मेरा गुरजोत सिंह संधू है जी, पंजाब से हूँ। पूरी यात्रा कर रहे हो? हाँ जी, कन्याकुमारी से कश्मीर। हाँ? कितने रोज 25 किलोमीटर कर लेते हो? डेली 25 किलोमीटर करते हैं, शाम को गेम लगाते हैं। पर ये बताओ, ये यात्रा से आपको क्या मिल रहा है? यात्रा से जी हम लोगों के पास जा रहे हैं, राहुल जी सड़कों पर जा रहे हैं, आम लोग जिनकी बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं राहुल जी के पास आते हैं, उनके दिल में दर्द है, राहुल जी उनकी मुश्किलें सुनते हैं और उनको भी अनुभव होता है कि हम जो देश के लोग हैं किस स्थिति से गुजर रहे हैं और हमारी ताकत बढ़ती है, उन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हमें और एक प्रेरणा मिलती है। और अरे वॉलीबॉल खेले? हाँ, आइए आप भी आ जाइए। ये आप लोग रोज वॉलीबॉल खेलते हो? हाँ हाँ, अरे 25 किलोमीटर यू आर वॉकिंग ऑल्सो, दैट यू हैव गॉट एनर्जी फॉर वॉलीबॉल? है वो है, बिकॉज मेंटली वी आर नॉट ड्रेन ना, मेंटली ड्रेन नहीं है हम लोग। मैंने जो अभी सवाल पूछा, ये यात्रा सब ठीक है, बीजेपी कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव तो हम जीते हैं, मोदी जी जीतेंगे चुनाव। देखिए, बीजेपी ने ये कह दिया ना फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब सही में फर्क हिमाचल में कौन जीता है चुनाव? हम जीते। और राजदीप सर देखिए, गुजरात में तो बीजेपी जीती है। फिर एक वो हिमाचल में जीते हम लोग, हमारी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में सरकार है। और ये यात्रा से, हाँ, भाजपा ने ये चुनाव में सिर्फ गवाया, हिमाचल गवाया, बाई इलेक्शन यूपी का छोड़ दीजिए तो गवाया, इसके पहले भी बाई इलेक्शंस गवाए, MCD गवाई, हम पाए हैं। 8 से 12 लोग बीजेपी की हवा टाइट हो गई है यात्रा से, लोग जुड़ रहे हैं, किसान जुड़ रहे हैं, डाटाबेस हो रहा है, किसान मिल रहे हैं, पॉलिसीज बनेंगी स्टेट वाइज, लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। आप देखना आने वाले साल में कैसे उभर के आएगी दोबारा फिर। देखिए, ये आपकी टोयोटा रथ है या किस तरह का कंटेनर है? अच्छा, तो आप लोग सब 8 से 12 लोग एक इसमें सो जाते हो और सुबह कितने बजे उठना है? 3:30 बजे। 3:30 बजे रोज? 3:30 से 4:30 में नंबर लगाना पड़ता है वॉशरूम में। ये हम लोग की लग्जरी, यही कपड़े हैं, यही पानी है, यही हम लोग के सब कपड़े, सामान, डायरी, ये सब कुछ यहाँ। ये हमारी लग्जरी। ऊपर दूसरा बंदा है, ये दूसरे इसकी लाइफ जो देखो, ये रह रहे हैं हम लोग। ये स्थिति हम लोग की, ये लग्जरियस है। और सब यात्री एक जैसे रह रहे हैं या कोई VVIP यात्री भी है? एज के हिसाब से अगर कुछ डिफरेंस होता है ना, कोई जस्ट अबव 50 है तो उनको नीचे का दे रखा है कि 4 वाला दे। मैक्सिमम हम लोग का ये है, सारे यात्रियों का ये कंटेनर है, जो भारत यात्री है उनके कंटेनर। तो ऐसे ही आप चलोगे जनवरी तक, कश्मीर तक? हमारी यात्रा 32 दिन रह गए। क्या बचा गया? अब 32 दिन रहे, 100 दिन तो हो गए। भी करते हैं आप लोग वैसे सब फिट हो गए हैं, ये तो है। मुझे ये तो पंजाब से है, ये तो फिट होना ही चाहिए। वेरी गुड, ओके। आप? मैं शायर हूँ कांग्रेस का। शायर हुआ कांग्रेस का? क्या शायरी सुनाओ। आप जब बोले वहाँ पे ना कि ये इस कुछ पार्टियां बोल रही है कि इस यात्रा से कोई फायदा नहीं, मैंने पहले ही इस चीज के लिए एक शायर लिखा है, मैं सुनाना चाहूंगा। सुनाइए। कि हम बिखरे हुए को अक्सर मिला देते हैं, हम बिखरे हुए को अक्सर मिला देते हैं, देशभक्ति की अच्छी सी सिला देते हैं, और लोग कह रहे हैं चल करके क्या कर लोगे, हम कांग्रेसी हैं साहब, सड़क पे चल के संसद हिला देते हैं। लोग कहते हैं कि ये यात्रा में क्या हो रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि नफरत की जाल को प्यार की तलवार से काट रहे हैं, नफरत की जाल को प्यार की तलवार से काट रहे हैं। नफरत बुरी चीज है, ये दीवारों पर पर्चा साट रहे हैं, और नफरत भरी दुनिया में आकर के तो देखो राहुल जी सड़कों पर मोहब्बत बांट रहे हैं। Santosh Kolkunda from Telangana. Now, Santosh, I believe you have done a cycle yatra earlier from Kashmir to Kanyakumari? In 2019, I did it. And now you are doing a Padayatra? Huh? Why? This cause is appealing to me. What is it about this cause that is appealing? This is, unity in diversity. That is the main task with which my leader is walking. So I wanted to walk with him, and I'm walking. Which is easier, cycle yatra Kashmir to Kanyakumari or Padayatra? Cycle yatra is, of course, it's easy. Then this Padayatra, we are able to talk to the people, and it's more appeal and attached to the people. Okay. आप बताइए मैम, आपका राय, आप भी पूरी यात्रा कर रही है? व्हाट्स योर नेम? जेबा खान, मैं जमशेदपुर से हूँ, झारखंड के, कन्याकुमारी से चल रही हूँ कश्मीर तक। तो रोज 25 किलोमीटर चल पाती हैं? हाँ,
बिल्कुल 25 से ज्यादा ही हो जाता है। कभी कभी हमें डेस्टिनेशन पे पहुंच के बस लेने के लिए 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर इधर और उधर, तो मतलब 25 से 30 किलोमीटर के बीच में रोज एवरीडे। और आप करती क्या है जमशेदपुर में? मैं स्कूल चलाती हूँ, प्ले स्कूल। आप स्कूल चलाती हैं, तो आपने वो स्कूल है या उसको छोड़ दिया है? स्कूल है, स्कूल चल रहा है और आप यहाँ चल रही हैं। क्या नाम? अरे ये दाढ़ी कहाँ से इतनी यार? यू मस्ट बी हैविंग द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द लॉन्गेस्ट दाढ़ी। क्या नाम है आपका? प्रवीण परमेश्वर। कहाँ से हो? केरला। केरला से? हाँ, यू स्पीक इंग्लिश वेल और नॉट? लिटिल बिट हिंदी, लिटिल बिट, सब थोड़ा थोड़ा। मलयालम अच्छा है, वेरी गुड। यात्रा पे पूरे नो प्रॉब्लम? दाढ़ी बढ़ा रहे हो क्योंकि राहुल गांधी ने दाढ़ी बनाई इसलिए बढ़ा रहे हो क्यों? I love that white color beard. अच्छा, Rahul Gandhi's beard is white, yours is black. I love that beard. You prefer that beard, but I believe you are a decent singer as well. हाँ, तो थोड़ा बोलो, क्या मलयालम में गाना गाओगे या? चलो गाओ, let's hear him. കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ ദിത്തൈതകതെയ്തോ കൊച്ചു പെണ്ണെ കുയിലാളെ ദിത്തിത്താരാതെയ്തോ കൊട്ടു വേണം കുഴൽ വേണം കുരവ വേണം ഓ ദിത്തിത്താരാ ദിത്തൈതകതെയ്തോ വരവേൽക്കാനാളു വേണം കൊടിതോരണങ്ങൾ വേണം വിജയശ്രീലാളിതരായി വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓ ദിത്തിത്താരാ ദിത്തൈതകതെയ്തോ. How are you enjoying the yatra, Yogendra Yadav? Put this yatra, I've been talking to people here, put this yatra in perspective for us. The BJP says that this yatra is a journey to nowhere. It has no political destination. As a political scientist, now a yatri, give us your response. Rajdeep, when this yatra began, a friend told me, कि योगेंद्र तुम तो सिंसियर हो, तुम तो चलते रह जाओगे, ये लोग हेलीकॉप्टर लेके चले जाएंगे. Such was cynicism at that point. No one believed that something like this could be turned into a reality. And if it could be turned into a reality, it would have any impact. Now it's 100 days. We know for sure some things have happened. You know, it's interesting that you're saying this, and again, sorry to sound cynical, there'll those who will say that Yogendra Yadav for a long time was Aam Aadmi Party. Then you got involved with the farmers' agitation. Now you are part of this yatra. You were critical of the Congress for a long time. On my own program, if you remember 2019, you said something that created a big stir that the Congress should die. Yeah. The same Yogendra Yadav 3 years later is saying that the Congress is being seen as the narrative. From saying the Congress should die to today seeing Rahul Gandhi and the Congress as a narrative. Explain the change. Do you see a continuity, Rajdeep? From 2011 to 2017, 19, 21, 22, there is this thing of standing up to the establishment. Once Congress was an establishment, then it's BJP that's establishment, and speaking about what appears to be to us to be truths, and not going for rewards. After all, I could have had some rewards in 2010-11 for not doing what I did, in 2015 for accepting what Arvind Kejriwal had offered, and in 2021 for keeping quiet on the farmers' issues. So if someone stands up for these things, to my mind, the important thing is the commitment is not to persons or to parties. The commitment is to principles. A final question, what's the most difficult thing about this yatra for Yogendra Yadav? It can't be easy. Getting up at 3:30 every morning, so what, 100 days? I'm not a morning person. Getting up at 4:30 in the morning, I dislike it. I actually sent a WhatsApp message to Rahul saying that I will organize a strike if you do not change it from 6 to 6:30. Instead of responding to me on WhatsApp, he actually announced it in a public rally the next day. I get messages, but when farmers can work at 6 o'clock in the morning, why can't the yatris? So I said, all right, I've got my response, but of course I don't like it. But it's improved my health. It's improved your health. I've lost 4 kgs. I'm walking much better, healthier, feeling very good. Okay, good. Good to see you, Yogendra Yadav. And thank you very much for sharing your thoughts on the yatra. You're looking like a real yatri. एकदम. इतनी ठंड नहीं है यार. इतनी ठंड है. चलिए, इतनी ठंड है. Thank you very much. 3:30 बजे और ठंड होगी. Thank you.
After having spent a day on the Bharat Jodo Yatra as it completes 100 days here in Dausa in Rajasthan, here are my key takeaways. The Yatra seems to have certainly enthused the Congress cadres. It also has repositioned Rahul Gandhi in a way as the Congress's marathon man come ideologue who is ready to hit the ground. But can it really restore the mass connect that the Congress seems to have lost with the average voter? Can it really reshape the narrative ahead of the 2024 elections? Can the Congress really compete in that sense as an election machine with the Modi-led BJP juggernaut? Those are tough questions that eventually the Congress as a political party will have to answer. At the moment, the Congress says the Yatra has been decoupled or separated from electoral politics. But can a political party really afford that seeming luxury? Rajdeep Sardesai for India Today. How do you really see Tata Motors really coming about? We just saw this news flash coming in that they're going to be raising the prices of commercial vehicles starting January 2023 as well. So for both their financials and for the auto space as a whole, what